नमामि शारदां देवी वीणा पुस्तकधारिणी नमस्कार करस्तुम्मी प्रसन्नास्तु सदा. Students, we are on the sixth part of quadratic equations and this is 10th SSC. Now, today we are going to do a very important topic, that is nature of roots of quadratic equations. Nature of roots of quadratic equation. Now, some concept you should know. Suppose I am going to write phi square means plus 5 into plus 5, that is equal to plus what is that, plus 25. But if I am taking minus 5 the whole square, that is minus 5 into minus 5 is again plus 25. You got it? So when I am writing 25, that may be a square of plus 5 or that may be a square of minus 5. So when you are taking root, especially square root, we don't know that this, when you are writing 25, we write above plus or minus root 25. That is plus 5 or minus 5. So to find out the root of plus 25 is possible, but it is not possible that minus 25, because minus 25 किसी का भी square नहीं होता. It is not possible. See the concept once again. I am repeating. Phi square, that is plus phi square is equal to plus 5 into plus 5. We got plus 25. And if I take the square of minus pi square, minus pi into minus pi is also plus 25 only. So when you are taking a root, square root of 25, it may be square root of what, plus or minus 25. That is what we got as what, plus or minus 5. But somebody asked me, what is the root square root of minus 25? It is not possible. Possible because minus 25 किसी का भी square नहीं होता. You got it? Please keep in mind. Minus 25 root is not possible. You got it? Have I understood? So what is that? Minus 25 root is not at all possible. This is the important concept. Once again I repeat, phi square का भी square plus 25 होता है, minus phi का भी square plus 25 होता है. तो plus 25 का root निकाल दे plus और minus लगा के, we are getting plus. But it is not possible to find out value of minus root 25 because minus किसी का भी square नहीं होता. Okay, they are always positive numbers. So minus root is not possible. Is it right? So please, this part you write in a way. और दिमाग में रखा हो कि minus 25 हो ही नहीं सकता. Now we are having formula. Okay, by formula we know that x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a, that we have studied. You got it? And with this we are getting two solutions. Minus b plus root of b square minus 4ac upon 2a, and x is equal to minus b minus root of b square minus 4ac upon 2a. These are called as roots. So हम लोग क्या बोलते हैं? Roots. Roots of this given quadratic equation. What is the formula to find out? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. Here also x is equal to minus b plus root of b square minus 4ac upon 2a. Minus b minus root of b square minus 4ac upon. These are called as what? Roots. If alpha and beta are roots, अब हम उसके नाम दे रहे हैं अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा जो होता है ना,
दैट इज माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So these are the two roots. Okay. Okay. So once again, by using formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. So there will be two roots. X is equal to minus b plus root of b square minus 4ac upon 2a and x is equal to. But these two terms are called as roots. And if alpha and beta are the roots, so alpha is minus b plus root of b square minus 4ac or beta is what? Minus b minus root of b square minus 4ac. These are the two roots. I think just you have to copy down it properly. We are going step by step. You are going to just going follow. So just pause the video and copy down this. Okay. Now, student, we have to solve this. Now let us see the nature of the quadratic equation. And अगर मुझे किसी ने बोला कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूला, तो ये फार्मूला तो मैं अप्लाई करूंगा, बट एज ए स्टूडेंट मेरे लिए इस फार्मूला का डिफिकल्ट पार्ट रहेगा ये, और उसमें से एक छोटा वाला पार्ट. इवन व्हाइल सॉल्विंग दिस वी डिड इट दिस b square minus 4ac. This we have calculated first, then we applied the formula. So this one is called as discriminant. What is called as what? Discriminant. Okay, I write it once again. Discriminant. Discriminant is denoted by this letter. This is a triangle जिसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा. Please ये word आता है ना, डेल्टा. It is denoted by delta, but we call it as what? Discriminant. The discriminant is what? B square minus 4ac. Okay. Now this is the important part of this formula. X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2e. So this b square minus 4ac is called as what? Discriminant, which is called as what? Delta. And value of discriminant will decide that what will be the nature of this quadratic equation. So there are three cases. This value of delta means discriminant, that is b square minus 4ac, if it is 0. If it is 0, so what will happen if I am taking b square minus 4ac is equal to root 0 is equal to 0 only, and when I am applying the formula x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a is equal to minus plus or minus root 0 upon 2a, that is minus b upon 2a. ऐसे कितने आंसर्स निकलेंगे? बिकॉज दिस पार्ट बिकम 0. ओके, सो व्हेन आई एम गेटिंग माइनस b अपॉन 2a, दिस इज एक्चुअली रियल रूट. ओके, बट एक ही रूट है, इसलिए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. कैसा है? रियल एंड इक्वल रूट्स. एक ही रूट रहेगा या इक्वल रूट्स लेकर तो भी चलेगा. बोथ द रूट्स आर इक्वल, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल. वंस अगेन देयर आर थ्री केसेस. ओके, अब वापस फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये पार्ट होता है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac. यही हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है. पहला नेचर क्या है? अगर ये डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, अगर मैंने ये रूट निकाला तो रूट 0 इज 0. अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो आई एम गेटिंग माइनस b अपॉन 2a. तो ये आंसर रियल रहेगा, मींस कुछ वैल्यू आएगी,
but it will have real and equal roots. It is the first nature of quadratic equation that is determined by discriminant. Discriminant का मतलब होता है b square minus 4ac, which is denoted by 0, denoted by delta. If delta is equal to 0, and we are getting real and equal roots. Okay, please students copy down. Maybe possible. इसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. Even further studies के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Copy down this. Next to value of delta, that is discriminant, right? Delta is b square minus 4ac is greater than 0. Means value of b square minus 4ac greater than 0 means 1, 2, 3 कुछ भी चलेगा. Okay, that is what plus 1, 2, 2.5 dot कुछ भी चलेगा. Okay, but therefore root of b square minus 4ac is possible. Plus 25 है, चलेगा ना? तो it will have two answers, plus 5 or minus 5. It is possible then by using formula. What I can write, x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. This root of b square minus 4ac has two values, plus and minus, correct? So this quadratic equation has real, and there will be two different answers will be there, two different roots will be there. Okay, real and unequal roots. Got it? It will have what? Even the value of b square minus this discriminant value is more than 0, its value is positive, means root is possible. Root is possible means have got two values. This quadratic, it is a quadratic equation, has a real and unequal roots. This is the very important thing for our quadratic equation. When b square minus 4ac has two values, so two values means the b square plus minus 4ac is possible. That is, root of that is having two values, plus value and minus value. Ultimately, this equation will have two values. Two values means has a real and unequal. They will not be equal to real and unequal roots. Please copy down by pausing this video. Now case 3. Correct? Case 3. Discriminant. That is delta is equal to b square minus 4ac has two values. Its value is less than 0. Means b square minus 4ac is negative number. Means suppose minus 5. For example, minus 5. Root of minus 5. That is equal to minus. That is root of b square minus 4ac is not possible. पॉसिबल ही नहीं है. जब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब as by using formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. It is not having value. Okay, it is not possible. So ultimately इसका आंसर हम लोग निकाल ही नहीं सकते. तो what are you going to write? Given quadratic equation do not have real root. This type of quadratic equation we cannot find out what root of this equation. हमें वहीं पे stop करना है. So
There are three cases. Discriminant having values equal to 0 as a what? Real and equal root. If it is more than 0, that is positive number, then it has a real and unequal roots. And value of b square minus, that is a discriminant, delta is less than 0. You may लिखना है given quadratic equation do not have a real roots. This also we have to cover down. So nature of a quadratic equation is described by discriminant. This is what? Discriminant. Discriminant divided by delta. Delta means what? B square minus 4ac of quadratic equation. This we are having three cases. What is that? Delta b square minus 4ac is less than is equal to 0. Value क्या है? Equal to 0. The roots of quadratic equation are real and equal. Real and equal. This delta b square minus 4ac is more than 0. It is positive value. The root of quadratic equation are real and unequal. And delta b square minus 4ac is less than 0. This value is negative. अगर negative value रहेगा, the root of quadratic equation are not real. Are not real. This way we are going to write. This is the main thing you have to keep in mind. Now this is the activity they are given. Value of discriminant. Student लोग please याद रखना, ये discriminant word बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम्स के बाद. Please याद रखना, discriminant is for quadratic equation, that is delta. Delta is nothing but what? Thus discriminant का मतलब होता है delta और delta का मतलब है b square minus 4ac. ओके, वो दिमाग में रखो, इस वक्त याद है, बाद में भूल जाओगे. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डेल्टा. डेल्टा इज व्हाट? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिमाग में बिठा के रखो. एंड वी हैव स्टडीड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स, डिपेंड अपॉन व्हाट? वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, राइट? तो ये 50 है. 50 का मतलब प्लस 50 माइनस 30 एंड 0. इस वक्त मुझे लगता है इसका आंसर मुझे पता है. तुम लोग एक पॉज करो वीडियो और लिख लो आंसर्स खुद से, तब में चेक करना. ओके, आई विल कंटिन्यू विद दिस. एज इट इज पॉजिटिव, करेक्ट? सो द गिवन quadratic equation has what? It has nature of root is real and unequal. Real and unequal. Correct? But as it is minus, it has no real root. No real roots. And 0. The nature of root is real and equal. Real and equal. By this way we have to write. This is the activity. It will have 1 mark in board examination. Between roots of quadratic equation, then alpha and beta are what? Roots of quadratic equation. A, B, and C are
coefficients of quadratic equation in general form ax square plus bx plus c is equal to 0. Is it right? So now we have to find out the relation between this alpha and beta. Alpha and beta are the roots, and a, b, c are the coefficients. So they are asked the relation between roots of quadratic equation and coefficients. Means we have to find out the relation between alpha and beta and a, b, c. There are the coefficient of quadratic equation in general formula ax square plus bx plus c is equal to 0. अब ये चीज से थोड़ा सा समझिए, बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ. नेक्स्ट ईयर से तो ये एवरीडे का काम रहेगा, ऑलमोस्ट एवरीडे. फिजिक्स मैथ्स में, इवन केमिस्ट्री ऑल्सो वी हैव टू डिराइव द फार्मूलाज, फिर उसके बाद अप्लाई करना है. बट अभी तो तुम्हारे लिए नई शुरुआत है. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, सो अब हमें हेल्प लेना है बाय यूजिंग फॉर्मूला. बाय यूजिंग फॉर्मूला, करेक्ट. What was that? X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a है, correct? As alpha and beta roots. So what is the value of alpha? Alpha is equal to minus b plus b square minus 4ac upon 2a. And beta is minus b square minus 4ac upon 2a है. You got it? Therefore, first of all, we see the relation like this. Okay, I'll make two parts. Suppose we are going to take alpha plus beta. Alpha plus beta का मतलब है, what is the value of alpha? Minus b plus root of b square minus 4ac upon 2a है. And what is the value of beta? Beta is minus b minus root of b square minus 4ac upon 2a है. Now denominator is same. So what will be alpha plus beta now? Minus b. So we will write denominator once only. Minus b plus root of b square minus 4ac minus b minus root of b square minus 4ac. So in such cases, this value will get cancelled. So what is there with you now? Alpha plus beta. Alpha plus beta का वैल्यू इस वक्त आएगा minus b upon 2a. मतलब अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a. 2 गेट कैंसर, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a. दिस इज द रिलेशन ऑफ सम ऑफ द रूट्स. दिस कॉल्ड एज व्हाट? सम. बिकॉज़ अल्फा एंड बीटा वी हैव टेकन. अल्फा इज माइनस b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बीटा इज माइनस b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. When I'm adding it, alpha plus beta become what? Minus b upon a. Please keep in mind. Okay. Now we are going for the second part. Second part is alpha into beta. This is called as sum of the root. This is called as product of roots. Now in the product of the roots, alpha is what? Minus b root of b square minus 4ac upon 2a into this we can put in a box. Correct? Here it will be minus b minus root of b square minus 4ac upon 2a. Okay? As here it is a plus sign, what we did, हमने वैसे ही लिख दिया माइनस बी. अगर इफ आई पुट इन द बॉक्स आल्सो, करेक्ट, ये ऐसे आएगा ना, माइनस बी वैसे आएगा बिकॉज प्लस साइन इज देयर इन बिटवीन. तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है. इट इज मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई मींस व्हाट? न्यूमरेटर न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड. तो अल्फा इनटू बीटा इज 2a into 2a
and upper part will become minus b plus root of b square minus 4ac and minus b square minus 4ac. Now this is a plus b, this will be a minus b. Even this minus sign, but you consider as a plus sign only. So minus b is one term, this is a plus b into a minus b. Correct? So alpha into beta becomes minus b का square minus root of b square minus 4ac का square upon 2 into 2 is 4a square. Have you understood this? 2 into 2 is 4 and a into a is a square. So in this case, if I solve alpha into beta, minus b का square is b square only. Again I put a bracket box and here what is going to happen? जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का टर्म निकल जाएगा एंड अंदर रहेगा minus 4ac upon 4a square. When we solve it, what I'll get alpha into beta is b square minus b square plus 4ac, yeah? Because some minus sign is there, upon 4a square. So what is happening? ये b square cancel हो गया. Correct? What is there with you? Alpha into beta is minus 4ac upon 4a square. 4 will get cancelled. Even a get cancelled. And we are getting alpha into beta is c upon a. So please students keep in mind, I am writing over here. Very important relation. What is the relation? Alpha into beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is c upon a. So this is the important thing. They are not going to ask how it is derived. This I have derived because it will become easy for you. I'll repeat it once again. This concept is very important. In board examination, they are not going to ask the concept how it is derived. But इस वक्त तुम लोगों को पूरा स्टडी करना पड़ेगा, एक बार लिख के भी लेना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा. The relation between the roots of quadratic equation and their coefficient alpha and beta are the roots of quadratic equation, and a, b, c are the coefficient of quadratic equation. General form a square plus bx plus c is equal to 0. हमें मालूम है फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या होता है, x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. अगर अल्फा एंड बीटा के रूट्स, तो अल्फा क्या होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बीटा क्या होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब जब हम लोग ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स. व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? दिस इज देयर माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट बिकम एज व्हाट 2a ओनली बिकॉज़ वी आर एडिंग इट एंड इट बिकम माइनस बी बी स्क्वायर. बट यहाँ प्लस साइन है ब्रैकेट्स के बाद, तो अंदर का साइन वैसे ही रहेगा. ये भी कट हो गया, या माइनस बी या माइनस ए, माइनस माइनस 2b अपॉन 2a. 2 विल गेट कैंसिल. अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस b अपॉन a. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस b रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज वैल्यू ऑफ अल्फा. बीटा का वैल्यू कितना माइनस b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. when you are multiplying numerator get multiplied minus b plus root of b square minus 4ac minus b minus, तो ये इस फॉर्म में है a plus b into a minus b. we know the formula of a plus b into a minus b is what a square minus b square and 2a into 2a is what 4a square. तो what are you getting b square minus का स्क्वायर कितना होता है plus b square और इसमें खाली रूट का स्क्वायर रूट का साइन निकल जाएगा तो क्या होगा b square minus 4ac. तो b square minus b square plus 4ac b square get cancelled. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. 4 get cancelled, a get cancelled. What I got alpha into beta is c upon a. This is the important thing. Alpha plus beta is minus b upon a. Alpha into beta is what c upon a. So sum of the root is minus b upon a and product of the root is c by a. Okay, students, you have to copy down. Just see, I have not solved a single question today. Just what we did the concepts. ये concept बहुत ज़्यादा जरूरी है. So this is the entire 6 part is only concept of what roots of quadratic equation. We are seeing the nature of roots.
नेचर ऑफ रूट में हमने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया था। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। डेल्टा का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, करेक्ट। अब जब हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चंस करते हैं या व्हेन वी गो फॉर द हॉट क्वेश्चंस, in that case some question will come across that b square minus 4 is equal to minus value will be, the discriminant value will be negative, तभी ये क्वेश्चन को हम लोग लिखना है, it has a no root एंड वहीं पे स्टॉप करना है। तो देयर आर 3 नेचर्स आर देयर डिस्क्रिमिनेंट में। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज मोर देन इज इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन हैज व्हाट, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ द वैल्यू इज, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0 है, दैट टाइम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज व्हाट, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। एंड अगर नेगेटिव रहेगा तो लिखना है नॉट रियल रूट। एंड देन स्टडी द रिलेशन बिटवीन द roots of quadratic equation and coefficient, that is roots are alpha and beta and coefficient of ABC। तो उसमें ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन सी एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए। एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद द 6th 7th part, we'll solve some questions on based on this. Thank you students. Copy down by pausing the video.